Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is a new video wherein I will be teaching you how to create this beautiful looking sliding window. मैंने actually floor plan पे काम किया था. If you haven't taken a look over it, I will put the link in the description box below and also in the above I button. And उसमें I had to create this particular sliding window. So it is very easy to create a sliding window, but उसमें एक proper accuracy होनी चाहिए और उसमें proper measurements भी use करना काफ़ी ज़्यादा important होता है. So today I will teach you how to create this beautiful looking sliding window. So let's get started with our video. Sliding window, ठीक है, sliding window देखते हैं. So for that again I'm going to use a rectangle tool, ठीक है, और इसमें I'm going to create using the dimensions. और यहाँ पर length मेरी होगी 1300 mm, which is 1.3 meters, ठीक है, 1.3 meters, and the width of this I'm going to use it again to be 0.2. ओके, और यहाँ पर हो गया है मेरा ये आउटलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर विंडो. और अभी हमारे पास ये होगा 0.05 ऑफ द जैम ऑन बोथ द साइड्स. तो इसके लिए एक्सेल हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सेल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर और एक यहाँ पर. And then we're going to offset this at 0.05, both these lines इस तरफ, ठीक है, and then we're going to trim the rest. ठीक है, इस तरह से हमारा जैम बन गया है, ठीक है. And now we need to create a rectangle over here and यहाँ पर because ये हमारा एक sliding window बनाना है तो इस तरह से हमें rectangle बनाना होगा, ठीक है. उसके लिए what I'm going to do is I'm going to use an Excel line again, okay, which is going to be vertical, and I'm going to place it right over here, ठीक है. और यहाँ पर इसको offset में करूँगी at 0.625, which is 625 mm की ये window होगी, ठीक है. ये स्लाइडिंग विंडो होगी, ठीक है. Alright, and इसमें क्या होगा हमारे पास it is this jam, इसमें भी हमारे पास यहाँ पर एक jam आएगा, ठीक है, and वो jam होगा 50 mm, ठीक है, which is going to be 0.05, ठीक है. यहाँ पर I'm going to offset this again at 0.05 meters, ठीक है. यहाँ से I'm going to take it this way, ठीक है. Alright, so ये बात तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है. And now I'm gonna trim the rest. Okay, मुझे ये actually ये सारे lines भी नहीं चाहिए. I also don't want this particular line. Okay, और यहाँ पर we're gonna form this particular rectangle. Now after this I'm gonna just create one horizontal line which is gonna be exactly at the middle, and I'm gonna offset this to be at 0.012. 0.2 और मैं इसे यहाँ इस तरह ऑफसेट करूँगी, and I don't really need this line anymore, ठीक है. अभी इसमें what I'm going to do is I'm going to create another Excel line, horizontal line, which is going to be middle of this. तो यहाँ से trim करना है मुझे, okay. I'm going to trim it from here. I'm going to trim it from here as well. And now what I'm going to do is I'm going to select all of these, and मैंने जो layer बनाया है यहाँ पर for the window, I'm going to place it inside this, ठीक है. यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है. बट व्हाट आई नीड टू नो इज दैट इस केस में ये जो होगा ये ग्लास होगा मेरा, ठीक है. सो ये ग्लास होने की वजह से आई एम गोइंग टू यूज ए ब्लू कलर इन दिस, ठीक है, जो कि होगा शुड आई गो सियान और ओके आई एम गो विद दिस डार्क ब्लू, ठीक है. और इसी को भी हम डार्क ब्लू करते हैं इसमें मैच टूल यूज करते हुए. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एंड या gonna select this, ठीक है. So ये हो गया, and this rest of this I'm gonna make this to be yellow because ये sliding window को एक difference दिखाने के लिए, ठीक है. I'm gonna choose a yellow color for this particular one, ठीक है. So ये हमारा ठीक है. So ये हो गया है हमारा एक sliding window which you can see over here, ठीक है. If you want you can actually change the color of this blue to be a little lighter. मैं अगर cyan use करूँ तो yeah, that is more peaceful for the eyes, right? So I'm going to use the same cyan color. Thank you so much for watching my videos. I hope you have loved watching how I've created the sliding window. अगर आपको कोई और topics पे workout करना चाहिए तो आप please comment section में ज़रूर डालिएगा. I would be very happy to teach you all कि किस तरह different doors, different windows,
फ्लो प्लान्स, जो भी आप चाह रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे आइडियाज़ दीजिए एंड डेफिनेटली मैं और फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूंगी और डिफरेंट आइडियाज़ से आऊँगी which is going to be really really helpful. So stay tuned up till my next video and inshallah I'll come up with more interesting videos. Up till then, like my videos, share my videos and do subscribe my channel, and up till then take care and bye bye.